Good noon, everyone, and welcome to Candid Conversation with an Expert, episode 4, with me, Sonu Singh, co-owner of Soulful Impressions, an image consultant, a soft skill trainer, behavioral coach, and an HR consultant by profession. So today on our episode, we have a very, very special guest because the topic of today is very relevant to what we are facing today. So as we go to unlock 2, and again, few states going back to their lockdown phases, we have to be more responsible while stepping out. Taking responsibility of wearing the mask, cleaning our hands, washing our hands, using sanitizer, maintaining social distance, and along with that, one more very important factor, because as we go more and more unlocking of the country is happening, along with some kind of guidelines being portrayed of what to open and what not to open, the cases are rising accordingly. 35,000 cases in the last 24 hours recorded every day, and government is going under massive checks with 10,000 checks happening every daily. So what are we, lakhs of checks happening daily actually, wherein Delhi recorded, I think, COVID testing of 1 lakh last, that's the last news that I heard of. So when we are stepping in such kind of a scenario wherein we are coming back to our so-called new normal life, so we have to be more responsible. We have to take that responsibility as a citizen to not spread the COVID more and become more aware. And one of the most important thing and the topic is immunity. Everybody is talking about it. Everybody, doctors, mental health awareness, experts, dietitians, I think each and everybody is talking about it so much that now we are confused as to what to have. Do we have the pills to build immunity? Do we have food to build immunity, or do we use our kitchen stuff? Right? And to help us understand this in a much more better way, we have an expert on our panel. So I welcome you both beautiful ladies. Our first expert on the panel is Ridhima Chawla. She is a mom, Hello. a working professional. She is a homemaker and the herbs and spices queen, I must say, with her Instagram page, Herbs Spices 2020. You can follow her to know more about homemade food recipes to build immunity. So she has got an intense and knowledge about which herbs to use, what spices to use to build your own immunity and also the immunity of your family, your near and dear ones. What would suit the kids? What would suit the elder? What would suit a young professional? What would suit a person going out on the road in this kind of a situation? So welcome, Ridhima ji. This is wonderful to have you on our panel. And second, we have my beautiful co-partner, Ishpreet Kaur, wherein we are working together in Soulful Impressions. To introduce her requires no introduction at all. She's an image consultant, she's a mompreneur, she's an etiquette coach, she is an soft skill trainer, she's a behavioral coach, a wellness practitioner, and an interior designer. So too much in one person. And I am very happy to be her partner and work together in Soulful Impressions. We are growing really well. So talking about food is something which is our fuel, right? It's a fuel for the body. And now the body needs more than the fuel. It needs maintenance also to grow immunity and fight the COVID that we are facing. So from Ridhima, I would like to know that everybody's talking about herbs and spices. So how these herbs and spices actually help the body? The first thing. And second thing, which herbs and spices should we consider? Like there are n number of things in our kitchen and n number of things that people are talking about. But I want to know the 5 or 4 or 3 most top important herbs and spices that we can immediately use from our kitchen. To Ridhima. All right. See, I would actually wanted to give a I wanted to give a lighter way. I'll explain you. Right now, we're in a wake of COVID-19 pandemic. We've stayed home. We've taken care of our family. We've done everything. Now, as you said, that we are coming towards a new life, a safer life. First of all, I wanted to clear you to both the ladies that immunity is not one night game. This is not going to increase in overnight, and there is no set pills that make pill laying and with the water and immunity build ho jayega.
we will have to maintain with a regular practice अपना diet और अपने mental health को balance करके अपना immunity increase और balance रखना पड़ेगा. So I'll be focusing on 5 such spice which are very well available in our spice boxes. हमारे मसाला box में available रहते हैं. I will speak about that and I'll explain you why these are why. मतलब सबसे पहला हमारे सवाल आता है कि why this masala, why this spices. So I will be talking about 5 such spices. First of all, it's tulsi, holy basil. This is very much easily available in our house also. When people tend to grow in their kitchen garden, and also available in a park or in a local area, or maybe in nearby temple, somewhere temple. It's very much available. So it's got chlorophyll, it's got vitamins, it's got many minerals in itself. All what we need to do is 4 to 5 leaves. We need to wash it in running water and either chew it, it's empty stomach, or we can infuse it in our tea. Or rather having the leaves, 5 to 4 leaves, as I told you, we must have noticed that there are some small seeds on the stems. Yeah. Those are very effective. Those are very very effective. आप उनको ले लें, आप उनको अच्छे से किसी साइज पे धो लें और उनको अपनी टी में या फिर ग्रीन टी में या ब्लैक कॉफी में इन्फ्यूज करके we can actually take it. So that is one thing which is very much easily available, जो हमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस करने में और इंक्रीज करने में हेल्प करता है. This is one. Second, I'll go to ginger. Now, ginger is something which has been traditionally used for medicines. काफी यूज होता आ रहा है and it's also used for cough and cold के लिए यूज होता है, digestive system के लिए we are using it. We're also anti-inflammatory है. The most during my survey, my studies in past few months, I have learned that ginger is one ingredient in our recipes, in our menu, in our food habits that is anti-cancerous property. It has anti-cancerous property. Wow. So if we infuse it in our tea, if we infuse it in our detox water, if we take it, just we can grate it, we can squeeze it some juice of the ginger और हम उसे शहद में ले लें सोने से पहले या एकदम उठने के बाद गर्म पानी से. It's very much effective for any kind of problem we are facing in our body. Even stress management के लिए काफी अच्छा होता है अगर हम रात को शहद के साथ थोड़ा सा 2-4 बूंदे शहद के साथ लेकर गर्म दूध के साथ ले लें. So this is also one of the very major, because we are taking it and then sleeping over it, तो वो हमारी body पे overnight effect करता है. This is the second. Now third I'll speak about is fenugreek. Fenugreek is धनिया. धनिया की पत्ती हम सर्दियों में काफी अवेलेबल है. अभी इट्स नॉट दैट मच अवेलेबल. यस, फ्रोजन अवेलेबल होगा, बट आई डोंट सजेस्ट टू यूज फ्रोजन फूड्स. आप इसके धनिया की सीड्स आते हैं, सॉरी इट्स मेथी. फेनुग्रीक सीड्स इट्स मेथी दाना यूज होते हैं. मेथी दाना आप अपने अगेन यू कैन इन्फ्यूज इट इन योर डिटॉक्स वाटर. मेथी की लीव्स यूज होती हैं एंड ऑल्सो इट इज बीन यूज एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन many in an Ayurvedic medicine. It's very openly used. So this is the third what is available. आप मेथी दाना को अपने चाय में इन्फ्यूज कर सकते हैं, डिटॉक्स वाटर में इन्फ्यूज कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट सोक इट फॉर 7 to 8 मेथी सीड्स. आप रात को पानी में सोक करें, सुबह उसे पानी भी पीना है और उसे च्यू भी कर ले. इट्स वेरी मच इफेक्टिव. व्हाई? बिकॉज it is not only increases your immunity system, but it actually helps you have a good डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे ओवर हम कोई हैवी फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड भी बच्चे ले लेते हैं कभी कभी, हम बहुत ज्यादा स्नैक्स पे भी डिपेंडेंट हैं आजकल, जस्ट बिकॉज पीछे कुछ दिनों में ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, बट पीपल वर काफी घर पे होम कुकिंग चल रही थी लोगों की, तो लोगों ने काफी चीजें एक्सपेरिमेंट किए हैं. तो अगर हम मेथी दाना को अपने डाइट में लेकर आएंगे तो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. वन सेकेंड, ये हम इसे ड्राई करके कसूरी मेथी की तरह भी यूज करते हैं. तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वेजिटेबल्स, हम जब कुक करते हैं, कोई सब्जी कुक कर रहे हैं और हम उसको लास्ट में एज अ गरम मसाला भी यूज करते हैं, तो देन इट इज ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव. नाउ दिस इज द थर्ड व्हाट आई हैव पॉइंटेड आउट. मैं आपको फोर्थ बताऊंगी. फोर्थ इज मैजिक. इट्स अ मैजिक, वी ऑल नो अबाउट इट. टर्मरिक, हल्दी. हल्दी हम बहुत एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं हर चीज में, चाहे हम हल्दी का पानी सुबह उठ के पीते हैं. What my experience has gone, because I have elders in families, I have youth in my family, I also have kids in my family.
हाउ आई हैव बीन यूजिंग इट, मैं उसको रात को पानी में 1 चम्मच हल्दी फॉर 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, मैं हल्दी को रात को उसको अच्छे से उबाल के रखती हूँ। सुबह उसको जब वो नॉर्मल आ जाता है टेम्परेचर पे, उसको सिर्फ ल्यूकवार्म गर्म करना है एंड देन जस्ट सर्व इट टू द फैमिली। इन इनफैक्ट मैं खुद भी उसे काफी एक्सेसिवली यूज कर रही हूँ। रादर मेरी फैमिली उसको सिर्फ दिन में 1 बार पीती है, बट मैं दिन में 3-4 बार पी लेती हूँ, बिकॉज मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा लगने लगा है। सो अब भी इट इज ऑल अबाउट आवर हैबिट्स, हम हैबिट में डाल लेंगे तो वो इट विल स्टार्ट लाइकिंग इट। एंड हम आप सब ये बारे में जानते हैं कि हल्दी का दूध तो खैर काफी लोग पसंद करते ही हैं। जब सर्दियां आती है हल्दी का दूध में हम डेट्स वगैरह भी पसंद करते हैं, बट हाँ गर्मी में हम थोड़ा उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं डेट्स को। सो दिस इज दी फोर्थ spices what is very easily available with us. Last but not the least, this is important because अभी मानसून भी है, समर्स भी एक पीक पॉइंट पे समर भी आया हुआ है, इज मिंट। मिंट ना ही सिर्फ हम चटनी में यूज करते हैं, हम सिर्फ चटनी बनाने के लिए यूज नहीं होता, काफी चीजों में यूज होता है। इट्स गॉट वेरी बहुत इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज होता है ये हमारे हमें ना ही सिर्फ डिटॉक्स करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज होता है। इससे इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज होती है, डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी इससे इंक्रीज होती है। हम इसको अपनी अगर हैबिट में लेकर आए, आई टेल यू सम फ्यू टिप्स आल्सो हाउ टू यूज इट। बट इसको अगर हम अपनी इसमें हैबिट में लेकर आए और अगर हम इसे किसी चीज में इन्फ्यूज नहीं कर कर सिर्फ और सिर्फ 5-7 दाने ऐसे नॉर्मली ले लें, because it's not bitter, it's very nice to have it and it's very refreshing also. आप इसको 5-7 दाने ऐसे सिर्फ च्यू कर लें, it's very effective because one, it is very fresh, it will help you with in summers also, plus it's got very good on our digestive system। कहीं पर भी आपको कोई हैवी फूड की वजह से या ओवर स्ट्रेस होने की वजह से हैवीनेस बॉडी में फील होता है तो ये आपको हेल्प करता है। These are all 5 very easily available ingredients, easily available spices which are available, herbs and spices जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। So these are all my tips जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसे अपने हैबिट्स में लेकर आए। Okay, this is all yes, thank you so much, that was really insightful. So हल्दी तो खैर लोग अपने खाने में भी यूज करते हैं, लेकिन फिर एक्चुअली जो हम वेजिटेबल में वो जब कुक हो जाती है तो आई थिंक दैट्स अ सेपरेट बॉल गेम ऑल टुगेदर ऑफ हल्दी का जो फ्लेवर होता है वो, और जब वहां से पानी में बॉईल करके आप जो बोल रहे हो, बिल्कुल जी। थैंक यू। एक चीज जरूर मैं पिन पॉइंट करना चाहूंगी जब आप हल्दी की बात कर रहे हैं, एनीबडी हु इज ऑन एन एल्डर एज और या फिर अगर वो ब्लड थिनर जैसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, खासकर हमारे कोई हार्ट पेशेंट हैं घर में या कोई डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर कोई ऐसा है जो ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं मेडिसिन में, वो हल्दी की यूसेज को लिमिट करें क्योंकि हल्दी भी हमारे ब्लड को थिन करता है। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये कच्ची हल्दी की बात कर रहे हो आप कि नॉर्मल हल्दी पाउडर जो मिलता है वो? कच्ची हल्दी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम कच्ची हल्दी यूज करें, क्योंकि जो हमारे को पैकेट्स में मिलती हैं वो कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव के साथ भी मिक्स हो सकती हैं, कहीं ना कहीं वो रिफाइंड होती हैं। तो जो कच्ची हल्दी है वो इज मोर बेनिफिशियल देन द पैकेट हल्दी। Okay, thank you so much, Ridhima. I move to Ishpreet, and Ishpreet, since you are into so much wellness programs and you are into wellness practitioner, so I want to know from you that how does food and the masala that we use in our food, or the herbs and the spices that Ridhima told, affects people on their mental wellness factor? Yeah, yes, of course. So as if I talk about mental health as a current situation, so in today's scenario, in the unlock phase, the mental health at quarantine time was much easier as compared to today. You know, balancing the mental health, talking to people, giving them that assurance that everything is going to be all right, was easier as compared to today. So because there's a lot of anxiety and worry have gripped again. Because of loss of jobs, people not moving out. So again, there is a very negative environment around. And yes, the food counts a lot. If I talk about, as Ridhima told, yes, haldi water, it is actually a very good detox as well as a refreshener. Even I take it in the morning. So just a pinch of haldi, not a lot of haldi, because again, it's a
hot weather, and too much of haldi also gives a lot of negative impact on the body itself. Yes, and even I was reading article this in the morning. There was a small article that non-veg is giving negative impact on the health these days. One, again, if we talk about during monsoon, we should try to avoid a non-veg. That is always there. But even chicken is being mentioned. There is a circulation going on that not eating non-veg is lessening your immune system against the coronavirus. Oh. So one should really go with a limit of it, because there are many people who consume it every day. Yeah. So I would rather say that they should limit to it, because these food items really give an impact on our immune system. So one should really not go with all these heavy masalas also. तो पहले टाइम से, और या अगर हम लोग जो बहुत ज्यादा हीलिंग और उनमें होते हैं, अगर आप देखो वो लोग सात्विक फूड पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं. So, or even when we cross 70 years of an age, people try to come into a very little less of masalas and all, because that gives more, impact on your immune system, that increase your immune system. So one should really work according to the food. That is very, very important, because this once you are healthy, of course your mental health is healthy. That is for sure. So that's how the food gives a problem, because otherwise gastric problems come. Then we have diabetic, we have heart problems related to all the heavy food. So this goes to your mental health. One, that's parallel. Yeah. So Second, I also would like to suggest that one should really go for a self hygiene. From a grocery market, maybe coronavirus infection, or a shopkeeper, or a people around me. So anxiety level is with the fear of that worriedness is so much. I don't know who's asymptomatic person. So maybe I can be. Even I don't know that, because there is no symptoms in me. So one has to really work on the immune system by eating healthy food. Fresh cooked food is more important. Go with the seasonal thing, because अगर आप आयुर्वेदा में believe करते हैं, तो हमारे कफ वाता और उस पे बात करते हैं हम जब, तो seasonal food उस हिसाब से बनता है जो seasons के accordingly हमें गर्मी या ठंडक देता है हमारी body को. So one should go according for that. Spices में भी same, जैसे अभी कुछ चीजें हमें इस weather के हिसाब से नहीं मिलती हैं. So one should be very cautious about what is having at what time. And जैसे कहते कि रात को दही कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. These are the factors one really need to work on. And I don't say it is universal suit everyone, but you should know your body. You should know what are your symptoms. You should know what suits you. You should not suits you. So accordingly plan your a day of food. Yes, the more you eat less because of the weather, the more you keep yourself hydrated. And the less of spicy food, less of spices in the terms of जो गरम मसाले, खड़े मसाले अगर हम कम रखें, we can really achieve a good immune system. And if I talk about even a South Indian food, that is very good at this weather, because anything you talk about in a South Indian aspect, their weather, if you see, they are always on a humid level and a pretty hot level. However, they consume it. चाहे वो आपकी इडली है, डोसा है, सांभर है, those chutneys with all those masalas, they give you that coolness in your body. It is one thing is the immune system, but other thing is also that your digestive system, your entire process of your healing of your body with the food is also very important. True. So the balance, it should be according. Okay. And yes, one thing, the more I could say is that other than increasing your immune system, when I talk about mental health, talk about it's a time when it is during the lockdown, we have talked about it. It was the time to reflect yourself. It was the time to rethink about yourself. So we have, rethought about ourselves during that process. Now
reboot yourself. That is more important. What has been done pre-COVID time, it's been done. One should now come, reboot, and rethink what is good for you, what is healthy for you. जो पहले बहुत बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे, कुछ वो बातें आज हमारे सामने आ रही हैं, तो उनको फिर से वापस लेके आइए अपने लाइफस्टाइल में. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स द वे यू कैन increase your mental state. So positive vibes, we all talk about it. Yes, when I talk about rethink, the opportunity, if there is a fear of losing a job, there is a fear, there is nobody in the market, nobody shopping around, still people are going on online. So it's a way how you mold it, how you rethink about your opportunities and take it out. Then I talk about reboot. Please mend your lifestyle, always go out, reboot your thinking, stop your negative thoughts coming around, and this will give an impact on your wellness. And reflect, come as yes you can achieve. We Indians always have that, you know, fighting spirit, so we all can win into that situation. And whatever the situation, it is far good away still, we all know. And thanks to our Indian food system, herbs also, which really increase our body immune system and gives us that energy and wellness within, mentally and physically, will really help us to fight this. True. Time. Thank you so much, Ishpreet. So That's what I could okay. Thank you so much, Ishpreet. So I can say that if you have a good balanced gut, you will have a good balanced mental health also. So that is the connection. Okay, so Ridhima, my second question for you would be like, you gave fabulous 5 herbs to be taken care from the kitchen, but how to use it to make a perfect recipe so that the elders, the youth, the kid, and self also, we all can consume it easily. So if you can just give some quick recipes which are yummy, delicious, and healthy. Yeah. Okay, I'll speak about 2 drinks and 1 recipe, which one drink will be including mint, which I told you earlier also before Ishpreet's speech, that mint is very good for our digestive system. Plus, हमारे इस weather में it's very nice क्योंकि cooling, it's very soothing, it's very cooling for us, and obviously it has very much mineral properties. तो मैं आपको एक मिंट की स्मूदी बता रही हूँ. हाउ टू मेक दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई ऐसी मिंट जब आप खरीदने जाते हो तो आप क्रिस्पी, प्लीज इसको नोट करिएगा, आप ऐसी मिंट खरीदें जो क्रिस्पी हो, बहुत ही डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए. सो इट शुड बी वेरी लाइट कलर एंड वेरी क्रिस्पी, जो आप एक बार हाथ से उसको पत्ते को उसकी पॉइंट से तोड़ने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छे से टूट जाए, क्रिस्प आवाज आए. वो वाली मिंट इज गुड फॉर द स्मूदीज क्योंकि उनका फ्लेवर काफी अच्छा होता है. तो वो वैसे ही आपने मिंट ली. यू प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉश एनीथिंग इन योर किचन अपार्ट फ्रॉम द ड्राई मसालास. आप उसको अच्छे से रनिंग वाटर में धोएं. कोई भी फ्रेश वेजिटेबल हो, कोई हर्ब हो, आप उसे रनिंग वाटर में धोएं सो दैट कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई डस्ट है, कोई इंसेक्ट है, क्योंकि इंसेक्ट भी आजकल काफी लगते हैं सब्जियों में, तो ये सब रनिंग वाटर से निकल जाए. इसको अच्छे से आप वॉश करने के बाद प्लीज मेक श्योर दैट मिंट हो गया, धनिया हो गया, इनको आप थोड़ी देर पानी में भिगो के रखें. क्योंकि उससे उनका जो भी उसमें नॉन मतलब जो भी चीजें हमें नहीं चाहिए, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो निकल जाए. तो आपने इसको मिंट को मिक्सी में डाल के तो से अबाउट, इफ यू आर मेकिंग 2 ग्लास फॉर किड्स, आप 330 ml ग्लासेस फॉर 2 किड्स बना रहे हैं, तो आप इसमें समवेयर अराउंड 2.5 ग्लास ऑफ शुगर यूज कर सकते हैं. मिंट डाल दिया, चीनी डाल दिया. यू कैन ऐड अ बिट ऑफ काला नमक, काली मिर्ची, हाउएवर यू लाइक द टेस्ट. इसका आप अच्छे से ग्राइंड कर लें. जस्ट ग्राइंड इट सो नाइसली कि इसका एक पेस्ट फॉर्म आ जाए. पेस्ट फॉर्म होने के बाद में यू कैन ऐड लेमन जूस as per your taste. I make for 4 glasses, so I tend to use 2 lemon full juice I use. So आपने काला नमक, काली मिर्ची, mint leaves, nicely washed, sugar, ये सारी चीजें आपने एक साथ इसमें ग्राइंड कर लिया. प्लीज इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया. अब यू हैव टू ऐड अ लिटिल जिंजर. आप जिंजर जूस ऐड करने की जगह पूरा का पूरा जिंजर जस्ट पील इट एंड यूज इट.
उसे भी ग्राइंड कर लिया इसके साथ में, सो दैट जिंजर भी आपके बच्चों में जा रहा है, बच्चों में, एल्डर में, whosoever wants to have some nice drink, because there are people who do not, वो छाछ या लस्सी नहीं पीते, they don't like that, तो आप इस तरीके से उनको दे सकते हैं। ये एक अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद में आप इनमें एज रिक्वायर्ड पानी डालें, ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर, वॉट एवर यू लाइक, और आइस डालना है तो आइस भी डाल सकते हैं। इसको आपने पानी डालने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद जब आप सर्व कर रहे हैं, आप इसे सिर्फ साइड कीजिए, छान लीजिए एंड सर्व देम जस्ट लाइक दैट। Okay. Try for yourself, and it is very awesome taste. I've tried it for myself. अब because mint का मौसम है, पुदीना का मौसम है, तो ये हमारे डेली हैबिट में बन गया है, we have to take it. इससे हमारी जो चाय कॉफी की जो हम जो चाय कॉफी ले रहे हैं, we are taking tea, we are taking coffee, वो reduce हो जाएगा, because obviously they also have their own side effects. तो उनको reduce करने के लिए you can replace with this. This is one of these tried and tested smoothie. Another I wanted to speak about detox water. ये हमारे यूथ के लिए और एल्डर्स के लिए काफी अच्छा है। इसमें काफी ऐसी चीजें हम इन्फ्यूज कर सकते हैं, एल्डर्स के लिए और यूथ के लिए काफी अच्छा है। डिटॉक्स वाटर को जब हम इन्फ्यूज करते हैं, वी कैन यूज अजवाइन, वी कैन यूज पुदीना पत्ता, वी कैन यूज लेमन वेजीज, वी कैन यूज कुकम्बर with the peel or without peeling, however you're comfortable with. Just make sure it's washed properly. आपने उसको क्यूब्स किया या फिर आपने उसको वेजीज किया, स्लाइस किया, however आप उसको 2 या 3 घंटे से ज्यादा इन्फ्यूज ना करें। कोई भी डिटॉक्स वाटर आप 2-3 घंटे से ज्यादा इन्फ्यूज करेंगे तो इट विल स्टार्ट डीऑक्सीडाइजिंग होने लग जाता है वेजिटेबल्स का और उसमें मसालास का। तो इससे बेटर है कि आप 2-3 घंटा आपने मॉर्निंग में, वी गेट अप एट 7 o'clock 6 o'clock हम उठे और हमने उसको 11 बजे तक किया, बाद में उसको साइड किया एंड देन वी कैन यूज इट अगेन। हमारा कॉफी एंड टी का इनटेक कम हो जाएगा क्योंकि हम उसमें ये सब पानी ले रहे हैं। Many of as per my surveys, there are many people who are also taking detox water, lukewarm करके उसको कभी lukewarm कर लिया या कभी उसको डायरेक्ट ले लिया। Many of them are taking green tea dips in the detox water, so that is also one way. Yes, आप detox water को आपने infuse किया तो I beg your pardon? With the weight loss concept. With the weight loss concept, but that's really nice because अभी आजकल हम लोगों को इन चीजों की जरूरत है and we are so much stressed out. हम घर पे हैं, जैसे अब ज्यादा करके लोग घर पे भी हैं, ज्यादा करके लोग 5-7 घंटे के लिए भी 2-3 घंटे के लिए जाते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं। We're not that much accessible to the work right now. तो अब खाना पीना हमारा काफी वैसा हो चुका हुआ है because हमारी शुरू से ईटिंग हैबिट्स खराब हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं। कई अब हम लोग वी आर ट्राइंग टू कम, जैसे कि ईश्वरीत जी ने कहा कि सात्विक खाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो वी ट्राइंग टू डू दैट। दिस इज वन वे डिटॉक्स करने का, यू कैन यूज इट। अब एल्डर्स विल आल्सो अप्रिशिएट, उसका टेस्ट काफी अप्रिशिएट करते हैं एल्डर्स भी। हाँ, ऑब्वियसली बच्चों को ये चीज अच्छी नहीं लगती तो आप बच्चों को इसी पानी में आप शुगर डाल दें, हनी डाल दें एंड जस्ट टेल देम टू हैव इट। This is one. Second is ginger ale. Ginger ale is completely nothing. Ginger juice infused with some honey or with some काला नमक और काली मिर्ची. That's it. आप उनको उनके किसी ड्रिंक में डाल के दे दें, apart from any milk containing, कि कोई लैक्टोज वाला ड्रिंक ना हो उसमें। आप उसको किसी वो आपसे, जैसा कि मैंने आपको मिंट की स्मूदी भी बताई, उसमें भी आप इन्फ्यूज कर सकते हैं जिंजर जूस, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक में इन्फ्यूज कर सकते हैं, स्प्राइट में, थम्स अप में, कोका कोला में। जो आई डोंट प्रेफर, इन चीजों को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, बट हाँ आप कभी ले रहे हैं और बच्चे जिद करते हैं कि हमने भी पीना है, तो यू कैन एक्चुअली इन्फ्यूज ऑल दिस थिंग्स एंड गिव इट टू देम। और जस्ट इन अ प्लेन नींबू पानी ऑल्सो यू कैन इन्फ्यूज जिंजर जूस और समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक तरीका है कि बच्चों नहीं डायरेक्ट लेते हैं सब्जी में से, स्पेसिफिकली बच्चे करते हैं कि अदरक चीज निकाल देते हैं साइड में क्योंकि उनके मुंह में आता है। तो अब प्रेफरेबली आई यूज कि मैं उसको ग्रेट करके यूज करती हूँ, अदरवाइज आप उसका जूस उसको बच्चों को ऐसे दे दें। दिस इज वन वे। लास्ट आई विल टेल यू वन रेसिपी, क्विक रेसिपी, हंग कर्ड की रेसिपी। आई एम श्योर काफी लोगों को ये पता भी है, बट इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें जा रही हैं, अब इसमें हम गार्लिक है, जिंजर है, हम इसे या तो आप मोर्टल पेसल में कूट के यूज करें, या फिर आप उसे ग्राइंड करके यूज करें, या आप उसे सिर्फ हाथ से ग्रेट करके यूज करें, तो उसकी क्वालिटी बढ़ती है। कभी भी हम गार्लिक या जिंजर को हाथ से ग्रेट करते हैं तो उस हर्ब की क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि उसके साथ
डायरेक्ट ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है. तो जब डायरेक्ट ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है जिंजर एंड गार्लिक के साथ, उसकी जो क्वालिटी है वो इनहेंस हो जाती है. तो उस तरीके से आप उसको यूज करें. हंग कर्ड किया ओवरनाइट, यू जस्ट हंग सम कर्ड. उसका पानी है दैट इज ऑफ दैट यू कैन ओनली टेक इट लाइक दैट, यू नीड नॉट टू यूज इन एनी अदर वे. आप उसको गार्लिक को मतलब जिंजर एंड गार्लिक को उसके ना डाला. यू कैन यूज सम ग्रेटेड वेजिटेबल्स, जिन कुकम्बर यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज कैरेट, यू कैन यूज however whatever flavor you like. You can also use some chili flakes, क्योंकि अगर बच्चों का फ्लेवर है वैसा तो बच्चे काफी अच्छे से इस डिप को, क्योंकि ये एक अच्छी सी डिप बन जाती है, इस डिप को आप नाचोस के साथ एंड चिप्स के साथ बच्चे रैलिश करते हैं. और रादर हैविंग मेयोनीज एंड सम चीज, आप उनको ब्रेड पे भी लगा के दे सकते हैं तो बच्चे इसको रैलिश करेंगे. तो डोंट नीड टू टेल देम कि उसके अंदर क्या है. ऑल व्हाट आई डू इसकी मैं बताती नहीं हूँ कि उसके अंदर क्या है. सो दिस इज हाउ आई सर्व दी फैमिली. And though my family is very quick in having all these things, so हमारी habit में पड़ गया है. Add on one more point. You can even use a beetroot. Beetroot. That also Yes, gives a sweetness to flavor, Yes. and kids enjoy that. So that is there. हाँ, वो And with the इसलिए beetroot, enjoy करते हैं क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है. It gives a strawberry color. पिंक एंड स्ट्रॉबेरी कलर हो जाता है. Yes, yes. add on the sweetness, no doubt. And with the detox water, what I do is, since a small bottle, because it should not be consumed the whole day, I ask my son to add on the matke wala pani with that detox The water. alkaline So the 1/4 of a detox and the 3/4 of the clay water. So that gives ek to pura oxidized ho jata water, and then it's good to consume and वो flavor नहीं आता उनको detox. Certainly. That way both the जैसे properties go कि inside. इशप्रीत जी ने ये चीज उठाया, मटके वाला पानी. हम लोग मटके वाला पानी भी इस मौसम में काफी यूज करते हैं. इनफैक्ट आप कॉपर ग्लास में या फिर सिल्वर ग्लास का पानी आप बच्चों को दें, ये भी ठंडक पहुंचाता है. इवन फॉर एल्डर्स ऑल्सो आप इस तरीके की पानी, नॉट जस्ट नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर, आपने चांदी के ग्लास में या कॉपर ग्लास में यूज कर लिया या मटके में यूज कर लिया. सो दीज और अल्कलाइन वाटर आर ऑल्सो गुड फॉर आवर बॉडी. ये सब हमारे समर वेदर के लिए है. या अच्छा, so I have just one small question. So आपने जो बोला चांदी का ग्लास का पानी, राइट? तो वो चांदी के ग्लास में पानी को स्टोर करके रखना है या डायरेक्टली जस्ट लो और पी लो? आप स्टोर करके रख रहे हो तो भी ठीक है, आप डायरेक्टली पी रहे हो तो भी ठीक है. Preferably store करके रखो. स्टोर करके रखो. तो स्टोर, क्योंकि मेरे पास छोटी सी ग्लास है, जो मतलब आर्यन जब छोटा था तो उसके पास एक छोटी सी ग्लास है. सो आई ट्राई कि वो उसमें पिए, लेकिन कभी पीता है नहीं. खैर, आई ट्राई अगेन. do try, because I also make sure that enough drinks from that water. अगर स्टोर हो जाए तो good enough, and नहीं हो तो भी डायरेक्टली लेते रहो. मैं भी ऐसी good. Okay, मतलब but the best part to give both of your sons is कि आपने पानी को स्टोर करके उसके अंदर उसका क्वालिटी एनहांस कर दिया, अल्कलाइन वाटर उसको बना लिया, बाद में उसको कन्वर्टेड इन अनदर ग्लास और कप वो ले लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि कहाँ से आ रहा है. That way, नहीं, मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, समझ आ रहा है, बात सुन लेता है. छोटा है. Okay, that's really nice. Thank you so much, Ridhima, for this wonderful recipes. And I think I will also try. It's very quick, and both of you had given really great inputs for kids, especially to how to make them eat and drink all these things, because unki immunity बढ़ाना, and even the elders, like everybody needs an immunity, but these two sections are like they need more. So yes, this can help a lot. Thank you so much. So coming back to Ishpreet, I just want a quick 5 top tips that you will give for having a good mental health during this kind of situation, and wherein we are under unlock, right? We are under unlock. People are going out. They are trying to go back to the normal. But see, if I tell about myself, if I step out, I don't feel that same vibe that was there pre-COVID, right? So I don't feel like going out. I said, what to go out? यार रहने तो घर में ही ठीक है. बाहर जाओ तो ऐसी उदासी छाई रहती है. So that is again another effect which is stopping me from going out or stepping out. Okay, until unless it's necessity for me, I don't go out at all. So what would be your 5 top tips to give to people who are in the same mental frame to get into some positive outlook towards the thing? See, the first thing I would say that boost your positive thoughts. Keep yourself positive. Stop hearing the negative news. That stay away from the social media regarding the news. That would I will suggest the first thing.
Yeah. Yep. For the keep yourself motivated, that is more important. Try to find most of the opportunities from every single thing you feel that it is a block. I'm sure there is always the other side of that coin. So try to motivate yourself with the finding the positive possibility, what you can do it, not rather thinking what I can't do it. Come to it, I can do it. True. So that way, eat well. As I said, no added sugar, not much fats. Be more plain towards go towards the sattvic food. Even the atmosphere, the weather say currently to us that be light on your food, eat before sunlight, sleep well. So these are the basics what we do it. Social media, sanitize yourself. That is the most important thing. Sanitize yourself, your surroundings. That is important. Don't neglect to it. Do not ignore it. It is very, very important. So taking out shoes, washing your hands, wearing a proper mask. Even the N5 mask with the wall is not being considered now to be a protective one. So go to the simpler mask, which has 3 layering. Wash them regularly. So these are the basic sanitizing. Stay yourself healthy. That is one thing. Motivation, as I told you, very, very important. The more you motivate yourself, that's how you will get boost to fight this corona or any other effects, negative effects what are coming, maybe due to your job, work, business, anything. We can do it and we will do it. That should be the spirit. So one of my healer friends, she always suggests one thing regarding your negative thoughts. The day most of the people do journaling. I'm sure many of the people do adopt that. In case if you don't also, take a piece of paper, write down any thoughts coming. That is known as catharsis. She always, promotes a lot, and she even tells me, you do that. So any thoughts without thinking what is coming, कि आज मेरे साथ क्या हुआ, वो नहीं. Just write down what is all coming. Maybe you do it in the morning. Maybe you can do it before going to bed. So just write out. It should not be a proper writing. You just scribble the thoughts. Think that you're just scribbling that thoughts and tear that page. In the end, once you're finished, you will feel so relaxed. You will feel like you have let it out, whatever it is. So that is a good process. That is a good therapy I have found regarding keeping yourself positive, keeping yourself motivated. Take out whatever it is in your heart. That is the best thing to do, which is really tough. I'm sure if you come into a practice, it will help you a lot. Yes. Yes. And stay socially connected. That is again important. Thanks to social media, thanks to internet, it's been a pleasure and a boom at this hour. So be close to your networking people or maybe your loved ones. It is important to talk because as the case happened regarding Sushant Singh Rajput, something one should not go into that stage. The more you talk, the more you will feel light. So these are the 2 ways, catharsis and talking to people, communicating to people is very important in these days. It will really help your mental health. True. Eat more healthy food and be happy. That's it. That's the best I could say. And yes, meditate in the morning, before going to sleep. It's the best thing you can give to yourself. So 5 things for sure. More than 5 things, I think. Hygienic. Yeah. Eat well, stay hygienic, mental health strong, catharsis, and meditate. And of course, exercise. 6. Basics. That's such wonderful insight from both of you ladies. I'm really enlightened today as such. So yes, having a good gut, good mind, good heart, and a good smile. I think all these 4 things would actually help us beat this moment that we are into and grow into a better human being and a better place. Absolutely. True. And this practice will really help us not in during this time, but coming years. It will really build us strong. The years coming in front of us are going to change a lot for our kids, for us, for everybody as such.
And to actually sustain that, we need to have all these aspects. So thank you so much. It was wonderful having both of you on my Thank you. panel today. And I hope Thank you. Ridhima's herbs and spices and with Ishpreet's all gyan for mental Thank health, you. Thank you. me Thank you. and my audience, whoever would be listening to us right now, would really benefit it from us, and they will take this into regular practice. So like immunity is not built in a day, neither was Rome built in a day, neither is a mental health built in a day. So we need to do it daily, little by little, and we need to grow it. Thank you so much. Yes. Wonderful having Thank you all here. you. Thank you. Thank you. Thank you.